Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Students, today we will start lesson 15 of science, water. Chapter 15 Water. The Earth's surface is covered with about 2/3 of water. Water is essential for the survival and growth of plants and animals. We need स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारी जो लैंड है, अर्थ है, उसके सरफेस का 2/3 पार्ट है जो वो वाटर से कवर्ड है, ढका हुआ है. वाटर जो है हमारे जीवन सर्वाइव के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जीवित रहने के लिए एक तरह से नेसेसरी है. need water for various purposes such as drinking, cooking food, washing clothes and utensils, flushing toilets, watering plants, cleaning floors, and many other activities. If the water supply to your colony is stopped, how would you manage without water? It is this importance of water in our lives that makes us keen to learn how to use water judiciously and how to conserve and save it through various ways, including rainwater harvesting. बेटा हम देखते हैं कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो काम है हमारे डेली लाइफ के, उनके अंदर मोस्टली सब में जो है वाटर का यूज होता है. तो हम देखते हैं कि वाटर का जो यूज है हमें कैसे जो है सावधानी से करना चाहिए और कैसे जो इसको कंजर्व करना चाहिए, इसको संरक्षित जल को, वाटर को करना चाहिए. Uses of water. We need water for various purposes. Some important uses of water are described. Water is used in industries for producing almost all the things we use. It is a good medium for the transportation of people and goods by boats and ships. Water is used in radiators of vehicles, cars, buses and trucks to keep their engines cool. तो हम देखते हैं यूज ऑफ वाटर में, जैसे हमने पहले जनरली जो यूज हम आपको बता चुके हैं कि वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लॉथ एक्सेट्रा वर्क कामों में करते हैं. इसके अलावा वाटर को हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जिनके अंदर की जो हमारी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में वाटर का यूज होता है. नेक्स्ट है कि वाटर जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है. लोग जैसे हमारे वाटर होता है, वाटर जो सोर्स होते हैं उनके अंदर बोट और शिप्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट करते हैं. इसके अलावा वाटर जो है रेडिएटर्स होता है व्हीकल का, यानी कि जो व्हीकल के जैसे कार, बसेज है, उनके जो इंजन उसको कूल रखने में भी काम आता है. Water is an essential requirement for growth and development of any plant. Water provides a medium for recreational sports such as swimming, boating, and water skiing. Water is used for generating electricity. इसके अलावा वाटर जो है बेटा ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है. वाटर जो एक तरह से कुछ हमारे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर में ही वो गेम जो पॉसिबल होते हैं, जैसे स्विमिंग, बोटिंग, वाटर स्कीइंग. इसके अलावा वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स प्लांट्स बनते हैं जहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है. Sources of water. There are two main sources of natural water: surface water, underground water, or subsoil water. Surface water. Surface water is present on the surface of the earth. It is of the following types. Rainwater. सोर्स ऑफ वाटर में हम फर्स्ट देखते हैं कि सरफेस वाटर. सरफेस वाटर जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है. तो इसके कई सोर्स है, देखते हैं हम इनके बारे में. इनके फॉलोइंग टाइप्स बताए गए हैं. Rainwater is considered to be the purest form of natural water because it is usually free from any impurities. But the first showers while coming down to earth collect dust particles, germs, and bacteria in the atmosphere. So, they contain most of the impurities. तो इस फर्स्ट है रेन वाटर. रेन वाटर जो होता है वो हमारे नेचुरल वाटर का जो सबसे जो है शुद्ध रूप होता है, जो हमें वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है अशुद्धियाँ यह अशुद्धियों से मुक्त होता है. इसके अंदर किसी तरह की जो इम्प्योरिटी नहीं होती है. लेकिन जो फर्स्ट बारिश आती है, फर्स्ट शावर आती है,
हमारी पृथ्वी के ऊपर, उस समय जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो धूल, कीटाणु, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं और ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज, वो इसमें मिल जाती हैं। River and lake water. The water in rivers and lakes comes from rain and melting of snow on the mountains. Water flows down the mountains and goes into rivers. On its way, it dissolves some soluble salts and carries suspended impurities. It also contains waste materials that are discharged into rivers by factories. River water may also contain germs that cause dangerous diseases like jaundice, dysentery, cholera, and typhoid. सेकेंड हमारा सोर्स है रिवर और लेक वाटर। तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर जो है रिवर्स और लेक के अंदर रेन से आती है। इसके अलावा जो हमारे माउंटेन्स पे जो स्नो होती है, बर्फ़ होती है, उसके पिघलने से आती है। तो वाटर जो है इसके अंदर माउंटेन से फ्लो होता है और वह रिवर्स में आ जाता है। तो इस चीज़ से जो सोल्यूबल सोल्ट होते हैं, वो इस पानी के अंदर मिल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं और वो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाते हैं, अशुद्धियाँ आ जाती है। तो इससे जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर, वो इसमें मिल जाते हैं, डिस्चार्ज इनटू रिवर्स में मिल जाते हैं। और ये जो है फिर फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो है का जो पानी होता है वो, और सिटी से जो आते हैं स्वेक्स के पानी, वो आकर इनके अंदर रिवर्स में मिल जाता है। तो यह जो पोल्यूटेड पानी होता है, इसके अंदर जर्म्स होते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस। तो ये जो हमारे एक डेंजरस डिसीज़ के कारण बनते हैं, जिनके कारण की जॉन्डिस या क्लोरा एंड थाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। Sea water, streams and rivers finally flow into the sea. They add dissolved impurities like salts with water into the sea. Sea water contains about 3.6% by mass of dissolved salts, with the chief constituent being common salt. Due to the presence of a large amount of common salt, sea water is salty to taste and is called saline water. Being highly saline or salty, sea water or ocean water is not fit for drinking or for other purposes like agricultural or industrial needs. नेक्स्ट है सी वाटर। तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स होती है जो फाइनली क्या करती है, फ्लो करके सी के अंदर मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। तो इसके अंदर वो अपने अंदर जो बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज होती है उनको डिसोल्व कर लेती है, मिला लेती है इस वाटर के अंदर, जो कि सी में चला जाता है। और यह जो वाटर होता है इसके अंदर 33.6% जो होता है वो सोल्ट मिला हुआ होता है। ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस से जो लार्ज अमाउंट जो कॉमन सोल्ट होता है सी वाटर के अंदर, तो हमारा जो वाटर होता है वो सोल्टी हो जाता है टेस्ट के अंदर, उसको सलाइन वाटर कहते हैं, इनके खारा पानी कहते हैं। तो जो हाईली ज़्यादा मात्रा में सलाइन होता है सी वाटर के अंदर, तो ये जो कहता है ओशन वाटर के अंदर, ये हमारे ना तो ड्रिंकिंग के काम आता है, ना ही ये अदर एक्टिविटीज जैसे लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नीड्स के इनमें भी है, काम नहीं आते, इनके लिए भी फिट नहीं रहता है। Underground water or subsoil water. Some of the rainwater that falls on earth seeps through the soil and goes down under the surface of the earth. Ultimately, this water is stopped by some hard, non-porous rocks and collects there. This reservoir of water collected over the hard, non-porous rock below the surface of the earth is called groundwater or underground water. अंडरग्राउंड वाटर और सबसोइल वाटर में होता है कि कुछ जो रेन वाटर होता है हमारे, जब अर्थ के ऊपर फॉल्स होता है, हमारी पृथ्वी पर गिरता है, तो ये क्या करता है, सोइल जो होती है, सोइल के ऊपर जो है सिप करता है और हमारे अंडर जो होते हैं अर्थ के जो नीचे की सरफेस होती है वहाँ पर यह चला जाता है, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यह वाटर जो होता है स्टॉप्ड हो जाता है कुछ हार्ड नॉन पोरस रॉक्स जो नीचे हमारी अर्थ की जो नीचे होती है, उन जहाँ पर ही कहीं रॉक आ गई या कोई ऐसे कोई सम हार्ड जगह कोई चीज़ें आ गई, तो वहाँ पर जाकर यह रुक जाता है और कलेक्ट हो जाता है वहाँ पर। तो जो रिवर्शियस वाटर होता है जहाँ पर जाकर ये कलेक्ट होता है, ठीक है, नॉन पोरस रॉक्स ये सरफेस की,
तो वहाँ पर जाकर जो कलेक्ट हो जाता है ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। The level of groundwater is called water table. Groundwater is pumped out by digging wells deep till it reaches the water table. Hand pumps or tube wells are also used to pump out groundwater. This groundwater is used for household, agricultural, and industrial purposes. तो ये जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है ये जो है हमें पंप के द्वारा पंप्ड आउट, तो डिगिंग के द्वारा कुओं को खोदकर जो है काफ़ी जो पर्याप्त मात्रा के जहाँ गहराई तक होता है वहाँ तक पंप के द्वारा वहाँ पर पहुँचते हैं और वाटर जो होता है वाटर लेवल उसको जो है ऊपर हमारे आ जाता है। तो यह जो हमारा वाटर लेवल होता है अंडरग्राउंड वाटर होता है ये हैंड पंप और ट्यूब वेल्स के थ्रू भी जो है हम इसको बाहर लाकर जो यूज करते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो है हमारे हाउस होल्ड के कार्यों में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पर्पजेज में यूज होता है। You may have seen water coming out from under the ground in the form of a spring. This water is called spring water. It is also known as underground water. Different states of water. Water exists in 3 physical states: solid, liquid, and gas, under different conditions. Ordinarily, water is in liquid state, but when it is kept in the freezer or a refrigerator, it freezes and forms ice. Ice is the solid state of water. When heated, water converts into water vapor called steam. So, steam is the gaseous state of water. Water can be changed from one state to another by heating or cooling. For example, ice, solid. On heating, melting of ice into water, liquid. On heating, evaporation of water leads to steam, gas. Steam gas. On cooling, condensation of steam gives water liquid, which on cooling, freezing of water gives us ice, solid. तो डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर के अंदर जब वाटर की 3 मेन स्टेट पाई जाती है लिक्विड, गैस, ठीक है, और स्टीम। तो इसमें बेटा क्या है कि हमारा जो मेनली हम रूप से कहते हैं तो वाटर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन हम जब वाटर को फ्रीज के अंदर रखते हैं तो बेटा वह जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जब हम वाटर को बेटा गर्म करते हैं, ठीक है, तो यह जो है इवेपोरेशन की फॉर्म के अंदर जो है चला जाता है। तो आइस हम जो इसकी स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं हम इसको, जैसे आइस है हमारी सॉलिड स्टेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो यह मेल्टिंग हो जाती है और वाटर जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब हम इस वाटर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वाटर जो है स्टीम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टीम गैस को जब हम कूल करेंगे तो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इसको जब हम फ्रीज में अगर कूलिंग करेंगे तो यह जो फिर से आइस सॉलिड बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि वाटर की जो स्टेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। Evaporation of water. You must have observed that when we spread wet clothes on a rope or a wire, they dry up after some time. Where did the water in the clothes go? The water present in wet clothes evaporates when it receives heat from the sun or when it receives air to form water vapor. This water vapor goes into the air. So, when all the water present in wet clothes evaporates, the clothes dry up. The process of changing water, liquid form, into water vapor, gaseous form, is called evaporation of water. एविपोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है बेटा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम अपने कपड़े धोकर जो है धूप में सुखाते हैं तो कुछ समय के बाद जो है ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो उनके अंदर जो वाटर था क्लोथ्स के अंदर वह कहाँ गया? वह वाटर जो था वेट क्लोथ्स के अंदर
इवेपोरेटेस हो गया जब उसको गर्मी सन की हीट मिली तो वह जो है भाप बन गया और भाप बनकर जो है निकल गया। तो वाटर जो वेपर होता है वो एयर के अंदर चला जाता है। तो हमारे जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो उससे सूख जाते हैं। तो जो प्रोसेस होती है चेंजिंग वाटर की यानी कि लिक्विड फॉर्म से इनटू वाटर की वेपर गैस फॉर्म के अंदर, इसको इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहलाती है। Due to evaporation of water, we can observe the following. Water spilled on a floor dries up and disappears. Water from wet roads and puddles and rooftops of our houses formed during rains dries up and disappears. Salt is obtained when water from the sea is left in shallow pits. The sea water evaporates, leaving behind the salt. Do you remember the activity in chapter? तो हम देखते हैं कि वाटर एवरेशन के कुछ और भी फॉर्म होते हैं। जैसे हम अगर फ्लोर के ऊपर जो है पानी को बिखेर देते हैं तो कुछ देर बाद जो है सूख जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी कि वाटर का जो वेपोराइज हो गया है। इसके अलावा जो रोड पे ठीक है वो छतों के ऊपर वाटर होता है वो कुछ समय के बाद जो है वो गायब हो जाता है। इसी तरह इवेपोरेशंस की प्रोसेस के द्वारा ही जो हमारे सी होते हैं, समुद्र होते हैं, वहाँ पे हम साल्ट को बनाते हैं। वहाँ पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद जब है पानी इवेपोरेशन होकर ऊपर चला जाता है तो नीचे जो है वो नमक रह जाता है। 5. In which salty water was heated? What did we observe? The water evaporated and the salt was left behind. We conclude the following facts from this activity. On heating, water changes into water vapor. So, heating is essential to convert water into vapor. Water vapor does not carry away salt with it. Let us find out from where does the water present in the wet clothes or water spilled on a floor gets the heat it needs to evaporate. Transpiration. Plants also need water to grow. They take this water from the soil through their roots. They use a part of this water to prepare their food, photosynthesis, and store some of it in their different parts for various other reactions. The excess water is released by plants into the air as water vapor through the small pores in their leaves, called stomata. This loss of excess water from plants as water vapor through the stomata on their leaves is called transpiration. So we can ट्रांसपीरेशंस में क्या होता है कि आपको पता है कि प्लांट जो है आप उनकी ग्रो के लिए उनको वाटर की नीड होती है। तो ये वाटर जो है वो सोइल से रूट के थ्रू लेते हैं और वन पार्ट से, और उसके वाटर से जो है फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत। तो जो कुछ वाटर रह जाता है और रिटेन सम इन डिफरेंट प्लांट, बाकी का जो वाटर होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स के उसमें वो चला जाता है। तो रिमेनिंग वाटर जो होता है उसको प्लांट्स जो अपने बाहर कैसे रिलीज करते हैं, एयर के अंदर हो जाता है, वो वेपर प्रोसेस के द्वारा हो जाता है थ्रू स्टोमटा, यानी कि स्टोमटा के थ्रू वो जो है वेपर होकर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशंस कहते हैं। say that water vapor enters the air or atmosphere through the two main processes of evaporation and transpiration. Formation of clouds. The process of condensation in nature plays an important role in the formation of clouds. Warm air can hold a large amount of water vapor. As we go higher toward the mountains, the temperature decreases. It becomes cooler. At maximum height, the air becomes so cool that the water vapor in it condenses to form tiny droplets of water. These water droplets floating in the air along with dust particles form clouds. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बाई कंडेंसेशंस। तो इसमें क्या है बेटा, यह प्रोसेस होती है कंडेंसेशंस की नेचर के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में, यानी कि क्लाउड्स के बनने में। एयर जब वार्म होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो वह हल्की हो जाती है, गर्म जो वायु होती है तो बिल्कुल लाइट हो जाती है, तो वह लार्ज अमाउंट के अंदर जो है वाटर वेपोर हो जाता है, ऊपर चली जाती है वो।
ठीक है, उसके अंदर वाटर वेपर हो जाता है और वह ऊपर जा चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। वहाँ पर जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो ये जो है कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादा ग्रेटर हाई ज़्यादा ऊपर जाके दे एयर है जो है बिल्कुल ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, जिससे कि वाटर वेपर जो होता है वो कोल्डनेस से और टिन्नी वाटर की जो छोटी छोटी जो बूंदी होती है ड्रॉप्स उसमें चेंज हो जाता है। और यह वाटर ही जो है फ्लोटिंग एयर के अंदर जो है ये ड्रॉप्स होती है फ्लोटिंग करती है और इसके साथ जो है एयर के जो डस्ट होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और जो है वो बादल की फॉर्म बन जाती है। Warm air can hold a large amount of water vapor. The warm air that carries clouds rises up. Higher up in the air is more cool. Water droplets come together to form larger water droplets. The larger water droplets are so heavy that the air cannot hold them. They therefore fall down as rain. However, if the temperature is very low, the water droplets freeze in the atmosphere and fall as hail or snow. This coming down of water in the form of rain, hail or snow is called precipitation. Thus, water from water bodies, land fields or plants goes into the air in the form of water vapor, forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail or snow. This is called water cycle. Thus, water cycle. तो वहाँ पर ये क्लाउड्स बनने के बाद जो है जो एयर होती है वो हैवी हो जाती है, तो ये ऊपर जो है पानी को जो वाटर को ड्रॉप को जो होल्ड नहीं कर पाती और उसके बाद जो ये रेन के डाउन में फॉर्म में जो नीचे आ जाती है। और टेम्परेचर अगर वेरी लो हो जाता है ज़्यादा हो जाता है तो ड्रॉपलेट जो है जो फ्रीज हो जाती है जम जाती है और एटमॉस्फेयर के अंदर ही और इनसे जो क्या है हेल और स्नो ऊपर से गिरती है। तो यह जो वाटर होता है दोबारा से नीचे आ जाता है फॉर्म ऑफ रेन के अंदर, हेल और स्नो के अंदर, तो इसको प्रेसिपिटेशंस कहते हैं। Can be defined as a continuous movement of water from the Earth's surface and water bodies as water vapor to the atmosphere, and from the atmosphere back to the Earth's surface as rain, hail or snow. This cycle maintains the supply of water on land. Importance of rainfall. Every place in the world gets rain. However, the time, duration, and the amount of rainfall varies from place to place. In some parts of the world, it rains throughout the year, while in other places, it rains only for a few days. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. We eagerly wait for the arrival of the rain because of the following reasons. तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल में क्या है कि हम वर्ल्ड के अंदर एवरी प्लेस के ऊपर जो है बारिश होती है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होता है और अमाउंट जो होती है रेनफॉल की कितनी मात्रा में होगी वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। संसार के कुछ पार्ट्स ऐसे जहाँ पर कि जो है रेन जो है ईयर में एक बार होती है, जबकि कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर कि कुछ दिनों के बाद ही बारिश हो जाती है। हमारी कंट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल है वो मानसून के सीजन की ड्यूरिंग होती है। Rain brings relief by cooling the environment, especially after hot summer days. Farmers in India depend on the arrival of monsoon for sowing their crops in their fields. Rain fills lakes, ponds, and streams and raises the water table. So, it maintains the supply of water on land. रेन का हमारी क्या इम्पोर्टेंस होती है कि रेन जो है हमारे इन्वायरमेंट को कूल करती है। स्पेशल रूप से जब गर्मियाँ होती है, समर होती है, समर के दिनों के बाद जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो रेन आती है, बारिश आती है, तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसके अलावा फार्मर जो होते हैं इंडिया के वो मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनकी क्रॉप्स को सोविंग करने में, तो ये रेन से इनको हेल्प मिलती है। इसके अलावा रेन जो है लेक, पॉन्ड और जो स्ट्रीम्स होती है उनको भर देती है, दोबारा से उनका वाटर जो टेबल होता है वो राइज होता जाता है, रेजेस होता है, बढ़ जाता है। Natural disasters due to unpredictable rain.
Rain is beneficial for humans. However, it causes natural disasters as well, either due to very heavy rainfall or by not occurring for a long time. Let us consider both the cases along with their effects on our life. Heavy rain causes floods. Heavy rains for a long time result in an increase in the level of water in rivers, lakes, and ponds. The water may even spread over large areas of nearby lands, causing floods. The major calamities due to floods are: floods cause extensive damage to crops. This may cause acute food shortage. नेक्स्ट बच्चा, जो नेचुरल डिसास्टर होते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल रेंस के जब जो हमारी वर्षा होती है वो अनियमित रूप से ज़्यादा या कि उसका एवरेज ठीक नहीं होता है, तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है। वो क्या होती है? जैसे कि हैवी रेन कैजेस फ्लड्स, जब बारिश जो होती है वो ज़्यादा आती है बेटा, ठीक है, तो उससे क्या है कि फ्लड्स आ जाते हैं, इनके जो है बाढ़ आ जाती है। तो इसके जो बाढ़ के अंदर जो रिवर लैक और जो पॉन्ड्स होते हैं, जो उसका उनका लेवल बढ़ जाता है, उसके आसपास का जो लार्ज एरियाज होता है उनके अंदर जो कोस्टल एरिया, फ्लड्स का जो पानी होता है, बाढ़ का जो पानी आता है वो भर जाता है, और इसके अलावा जो साइक्लोन्स वहाँ पर तूफान आ जाते हैं। अब इसके बाद है बेटा, हमें जो मेजर क्लाइमेट्स होते हैं फ्लड्स के द्वारा वो क्या क्या होती है, उनसे क्या नुकसान होते हैं, ये देखते हैं। And deaths due to hunger. Floods cause serious injuries or death of domestic animals by drowning. Floods cause extensive damage to human life and property. Many people die by drowning. Their houses collapse and their belongings get lost in water. Electricity, water supply, and communication networks also get affected. बेटा जो हमारे फ्लड्स की वजह से जो नुकसान होता है उसमें कुछ मेन है, जैसे कि क्रॉप्स डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है, और इससे जो है फूड शॉर्टेज आ जाती है, और वो जो है भूखमरी है वो फैल जाती है, जिससे कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा फ्लड्स जो होती है वो इससे जो है सीरियस इंजरी हो जाती है, कुछ घटनाएं घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, और डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो डूब जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा फ्लड्स जो है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान करता है। काफ़ी लोग जो है वो मर जाते हैं, हाउस जो है वो क्लैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई जो है बी नेटवर्क है वो इफेक्टेड होते हैं। Floods wash away the top layer of the soil, resulting in soil erosion. Rain also affects the animals living in the soil. Animals living underground, such as earthworms and snakes, come out in search of air as the soil gets covered with flood water. When flood water recedes, there is a fear of spreading water-borne diseases like cholera, dysentery, and diarrhea. No rain for a long time causes. इसके अलावा रेन जो हमारे फ्लड्स आते हैं उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारी सोइल में रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गए, स्नेक हो गए। ये जो है एयर के सर्च के अंदर इनसे बाहर आते हैं, ठीक है, सोइल से बाहर आते हैं। जैसे बाहर आते हैं तो जो फ्लड का जो वाटर होता है, बाढ़ का पानी, वो उससे वो ढक जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। इसके अलावा जब फ्लड वाटर होता है उससे की वजह से जो है काफ़ी डिसीज़ जो है वो फैल जाती है, जैसे कलोरा हो गई, डिहाइड्रेरिया हो गया, मलेरिया हो गया। Drought. Absence of rain in a particular region for a long time, leading to severe shortage of water, is called drought. The major disasters due to drought are: the soil loses water by evaporation. It does not get water for a long time, so the soil becomes dry and hard and begins to crack. Crop plants cannot grow in this dry and hard soil. This may cause acute food shortage for the people living in the area. Vegetation such as grass and fodder does not grow well. This leads to shortage of fodder for domestic animals.
animals start dying due to starvation as no food is available. In extreme drought conditions, lakes, ponds, and even small rivers may dry up. This change affects aquatic plants and animals. The level of groundwater may also go down, leading to severe shortage of water. के बाद है बेटा कि जब लंबे टाइम तक रेन नहीं आती है तो उसके कारण जो ड्रॉट हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो जब ड्रॉट आता है तो सोइल के अंदर जो है इवेपोरेशंस की वजह से जो है वाटर लूज हो जाता है, कम हो जाता है, और सोइल के अंदर जब वाटर लंबे टाइम तक नहीं पहुंचता है तो ये ड्राई हो जाती है और हार्ड हो जाती है और इसके अंदर जो क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो क्रॉप और प्लांट जो है ऐसी ड्राई और हार्ड सोइल के अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, फूड शॉर्टेज आ जाती है। इसके अलावा वेजिटेशंस, ग्रास और फोडर जो होते हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिससे कि फोडर की शॉर्टेज आ जाती है डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, और एनिमल्स जो है वो एक तरह से भूख से मरने लग जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रॉट की कंडीशन होती है उसमें लेक, पॉन्ड्स और इवन जो स्मॉल रिवर्स होते हैं वो भी सूख जाते हैं। इसमें जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो भी नीचे चला जाता है। Water problem. There is a lot of water on earth, but only a small quantity of it is available for use by humans, plants and animals. Water is available in rivers, lakes and ponds. It is also available as underground water. This is called fresh water. Most of the water is in the oceans. Ocean water is highly saline, salty, and therefore cannot be used directly for drinking, industries, and agriculture. When the level of groundwater, water table decreases drastically, we cannot use it furthermore. The total amount of water on earth remains the same, but the demand for water is increasing day by day. It is due to the following reasons. The number of people using water is increasing due to rising population. वाटर प्रॉब्लम के का क्या रीज़न है जिसकी वजह से कि जो वाटर प्रॉब्लम होती है बेटा, ठीक है, तो इसके रीज़न है कि लोगों की जो संख्या है, वाटर को यूज़ करने के लिए वाले जो लोग हैं वो इंक्रीज हो रहे, संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि जो है वाटर की कमी हो रही है। मोर और मोर वाटर जो है प्रोडक्टिंग कार्य जैसे फूड एंड गुड्स के इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जा रहा है। More and more water is being used for producing food and goods in industries. We see long queues of people waiting to collect water. It makes our life very difficult. Hence, it is very important that water is used carefully and we must not waste water. How to save water? Use a bucket and a mug instead of shower while taking bath. In this way, almost 50% of the water can be saved. Close the taps tightly after using the water both at home and school. Avoid cleaning utensils under running water. Repair leaking pipelines or water taps. Check overflowing water taps to avoid water spill. Rainwater harvesting. तो हम जो है वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है कि हमें नहाते समय बास्केट और मग का यूज़ करना चाहिए। इससे हम जो है काफ़ी में उसमें पानी बचा सकते हैं। इसके अलावा हमें जो टैप होती है उसको टाइटली क्लोज करना चाहिए। हम जब उससे वाटर ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो हमें उसको जो है टाइटली बंद करना चाहिए, अपने घर पर भी और स्कूल में भी। इसके अलावा जो हमें क्लीनिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं अंडर रनिंग वाटर, ठीक है, उनको अवॉइड करना चाहिए। रिपेयर, इसके अलावा जो पाइपलाइन की रिपेयर है उनको हमें प्रॉपर करते रहना चाहिए। जो ओवरफ्लोइंग हो रही है वाटर टैंक के अंदर उसको चेक करते रहना चाहिए, वाटर का रिसाइकल करते हुए रहना चाहिए। The process of collecting rainwater from roofs and street corners and storing it for further use is called rainwater harvesting.
तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि द वह प्रोसेस जिसके अंदर कि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है रूफ फ्रॉम रूफ एंड स्ट्रीट्स, ठीक है, यानी कि जो हमारी छत का पानी होता है, जो हमारी स्ट्रीट गलियों नालियों का पानी होता है गलियों का, उनको स्टोर कर लिया जाता है और फिर इसको बाद में यूज किया जाता है, तो इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। Roadside rainwater harvesting. Rooftop rainwater harvesting. In this system, the rainwater that falls on rooftops of houses or buildings is brought down through water pipes and collected in big underground concrete storage tanks. This water may contain soil, impurities, and chemicals, and may need to be filtered before use. The base of the underground storage tank can have a percolation pit. This pit has a layer of broken bricks at the bottom, a layer of gravel in the middle, and a layer of coarse sand at the top. The stored rainwater gets filtered by the sand, gravel, and the broken bricks in the percolation pit. The outlet pit takes the filtered rainwater from deep into a pit in the ground. This raises the level of the groundwater. This groundwater can be used in future by bringing it up through hand pumps, tube wells, and boring technique. Roadside. तो वाटर कलेक्ट हार्वेस्टिंग के अंदर हमारे दो वेज होते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आपको ये आपकी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। इसके द्वारा जो हम रेन का जो वाटर है उसको शुद्ध रूप के अंदर जो कलेक्ट कर सकते हैं, उसको बाद में जो है अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंड वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. The rainwater that falls on tarred roads around buildings can be collected and stored by this technique. Percolation pits covered with concrete slabs and holes are constructed on roadsides. Rainwater falling on roads goes into these pits through the holes. After filtration in the percolation pit, rainwater enters the recharge well through the outlet pipe and gradually seeps into the soil. The advantage of rainwater harvesting is that it increases the availability of groundwater. This helps us to overcome water problem, especially during dry seasons. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को दोनों जो वे है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दोनों वे आपके दोनों तरीके जो अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा हमें अपने तरीके से भी जो है वाटर को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए था, ताकि हम फ्यूचर के अंदर जो है वाटर हमारे लिए अवेलेबल हो सके। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 3 स्टेट ऑफ वाटर विथ एग्जाम्पल। स्टेट्स कौन? सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर, गैस, स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? आफ्टर condenses the water droplet floating in the air along with dust particle from clouds. What is water cycle? A continuous movement of water from the earth's surface and water bodies as water vapour to the atmosphere and from atmosphere back to the earth's surface as rain is called water cycle. Question number 4, what are the two important processes through which water vapor enters the atmosphere? Evaporations and transpirations. Which substances make the sea water unfit for drinking or other purpose? Soluble salt. What is the process of changing water into water vapor known as evaporations? Which one will evaporated first, water in a shore or water in a cup? Water is source evaporated first because it source the water gets large surface area for evaporations. What is the process of collecting rainwater from roof and streets and storing it for further use? Collect roof water and roadside rainwater harvesting. What is formed on melting of ice, freezing of water, evaporations of water? तो इसमें आंसर आ जाएगा ए में वाटर, बी में आइस, सी में स्ट्रीम। नेम ए water-borne dishes, जोंडिया। Name the process by which wet clothes dry up when they are spread on a rope or a wire. Evaporations. How is water helpful in transport of nutrients from soil to different parts of a plant? Water acts as a medium of the transportations
of minerals and other nutrients from one part of plants to another. Next exercise is short answer question. First question is define transpiration. The process of release of extra water in plants into the air in the form of water vapor through stomata is called transpiration. What is drought? The absence of rain in a particular region for a long time leading to shortage of water is called drought. What is groundwater? The reservoir of water collected over the hard non-porous rock below the surface of the earth is called groundwater. Exercise long answer question. How is rain useful to us? Give any 3 reasons. The first is bring relief by cooling the environment, especially after hot summer days. It is important for irrigating the crop field. It maintains the supply of water on land by filling lakes. How do the animals living in soil get affected by heavy rain? The life of animals living in soil get affected by heavy rain as the land gets covered with water. The animals, snake and earthworm that live in soil come out in search of air and food. What is the advantage of rainwater harvesting? The main purpose of rainwater harvesting is not only to hold rainwater on the surface of the earth, but also to make rainwater percolate under the ground more efficiently. So as the recharge groundwater, this groundwater can then be taken out through various ways. How water is helpful in the process of water cycle? The trees absorb water from the soil through their roots. They release excess water as water vapor by the process of transpirations. This water vapor goes into the air and form clouds. The roots of trees also help in deep percolations of rainwater. How does flood affect vegetation? The flood water submerges the standing crops, grassland and forests. Due to this, the plants do not get sufficient amount of air and nutrition and die. What are the possible problems faced by the people of a country of the floods? The problems faced by people after floods are flood in city areas, lead to waterlogged road and street. This disrupts the traffic on road and causes inconvenience of the people. Floods causes extensive damage to crops. This may causes acute food. Why should we conserve water? As the population is increased rapidly, the number of people using water is also increasing. Day by day, also more and more water is being used in agriculture for producing food and by the industries which manufacture a large variety of products for our. What are the different methods of water conservation? This way, first plants more and more trees, use a bucket and a mug instead of shower while taking bath, close the tap tightly after using them, avoid cleaning utensils under running water, check overflowing of water. What are the types of rainwater harvesting? Rooftop rainwater harvesting, roadside rainwater harvesting. Why do prices of food, grains, fruit and vegetables rise during floods of drought? Floods and droughts damage the crops and create acute food shortage leading in increased price of food, grains, fruits and vegetables. Give reason. Several accidents take place in cold winter morning. तो इसका आंसर होगा fog in the cold winter morning reduce visibility due to which several accidents take place. B question, our feet become wet while walking on grass in cold winter morning. So the presence of tiny drop dew on grass wets our feet on cold winter morning. Question C, rain maintain the supply of water on land. Rain maintain the supply of water on land by filling